Good evening everyone and welcome to CT 360 series session on EduTap. And my dear friends, in the CT 360 series session, we cover the most important G and ESI current affairs that we are required to cover from the examination point of view. So be it you are preparing for RBI, SEBI, NABARD or the banking examinations like IBPS PO, SBI PO. So basically the current affairs plays a very important role in your particular sessions, right? And that's why, my dear friends, it is very important for us to ensure that we are covering the current affairs in a comprehensive manner. And that's why the CT 360 series session, where we cover important general awareness and the economic and social issues current affairs. So basically it helps you to cover not only covering the important current affairs, but we also helps you to identify that what are the important current affairs that you need to cover from examination point of view, how to cover these current affairs, in how much depth you are required to cover these current affairs, what is the right approach to study these current affairs. So all these parts we are covering in this particular session. So guys, if I'm audible and visible to all of you, please give me a thumbs up in the chat box so that we can start with the today's session. So good evening Gururaj, Rover, Shanika, Deepak and all other people who have joined us live today for this CT 360 series session, in which we will be covering the important current affairs of 10th to 11th of July 2025. So we basically conduct these sessions across the three stages. The stage one is we basically revise the important aspects and dimensions of the previous session. After that, we cover the important current affairs of the given dates, that is your 10th and 11th of July. And after that, we basically move on to solving the MCQs, because in the exam, these are the MCQs that we are required to solve, right? In order to clear the examination. And that is why it is very important for all of you to ensure that yes, your preparation is around all these pillars that we are covering here in the CT 360 series session, right? So guys, before starting this session, I would like to tell you here that we are also conducting some very important initiatives for your comprehensive current affairs exam preparation, right? So the first initiative is the government scheme session. You all know that government scheme is a very major pain point of so many students, because government schemes are being asked across all these examinations, be it your RBI, NABARD, right, be it your banking examinations. So that is what is very important to cover the government scheme, and that's why we are having this government scheme series that we conduct every Monday, Wednesday and Friday at 10:30 a.m. After that, in your phase 2 of the regulatory bodies exams, we see that there is a descriptive writing. To resolve your problem of the descriptive writing, we have come up with the Perspective 360 series session, where we cover basically how to write a proper descriptive answer, what is the right structure of the answer, and we conduct these sessions every Monday, Wednesday and Friday at 5 p.m. After that, the ESI and finance current affairs are very important for all of you, and along with the GA current affairs. So for your ESI current affairs and the general awareness current affairs, guys, we are having a CT 360 series session that we conduct every Tuesday, Thursday and Saturday at 5 p.m. that I have already told about you that what exactly we cover in these particular sessions. Now comes one of the very important session, that is your Finance 360 series session, where we cover important finance current affairs and the RBI notifications. So the people who are preparing for the RBI Grade B officer examination and the people who are also preparing for the banking examinations, जहां पर RBI के circulars डायरेक्शन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, so these sessions are really going to be very helpful for your preparation. So these sessions are being conducted every Tuesday, Thursday and Saturday at 10 a.m. in the morning. So guys, please note down this particular schedule of these sessions that we are conducting for all of you, so that you are not going to miss any of the single of them, because these are really going to help you in your examination preparation and to become the officer in your desired organization, right? So now I hope that everybody has joined us today live, and now my dear friends, it is a time to see that what are the different topics that we will be covering in the today's session. So we are having today 8 topics only. First, we are having a very important scheme which has been recently launched, the UNESCO World Heritage List. So guys, here let me tell you, the people who are preparing for the banking examinations, all these 8 articles are important for you from the examination point of view. But the people who are preparing for regulatory bodies exams like RBI, NABARD, so basically guys, let me tell you here that how we need to identify that which news article is relevant for phase 1, which is relevant for phase 1 and phase 2 both. So basically the current affair articles which are directly related to the topics which are mentioned in the syllabus, they are important for both phase 1 and phase 2. And the current affair articles which are not related to the topics mentioned in the syllabus like sports,
defense, awards, exercises. These are only relevant for the phase 1 of the examination. So here the two articles, the first two articles are important for both phase 1 and phase 2 examination, and the remaining articles are important for only phase 1 examination of your examination. Okay? I hope you are now having this clear understanding of these news articles, that how we define that this article is important for phase 1 and phase 2. Please give me a thumbs up in the chat box if this part is clear. Now we are moving towards the quick revision of the previous session. See guys, in order to cover the current affairs, revision is the key. And I believe कि आज सभी students पिछले session की revision करके आए हैं, क्योंकि अगर आप बिना रिवीजन के अगले सेशन पर बढ़ जाते हैं गाइस, देयर इज नो पॉइंट ऑफ कवरिंग दैट. अगर आपको पुराना सेशन ही याद नहीं है तो फिर नया सेशन भी एक तरीके से पाइल अप होगा आपके ऊपर, एंड अगेन इट विल लीड टू अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन यू. तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप सेशन में आए तो चीजों को रिवाइज करके आए. अब देखते हैं किस किसने रिवीजन अच्छे से की है, तो शुरू करते हैं अपने क्विक रिवीजन को. एंड हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन. तो पिछले सेशन में हमने कवर किया था एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन प्रोग्राम को. सो पहले आपको बताना है कि वो कौन सी स्कीम है जिसने द मिनिस्ट्री विच हैज लॉन्च दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव. वो कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट मिनिस्ट्री? सो द नेम ऑफ द मिनिस्ट्री इज मिनिस्ट्री ऑफ माइंस. सो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस हैज कम अप विद द इनिशिएटिव ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन प्रोग्राम. और ये कौन से ईयर के अंदर? दोस्तों अगर हम बात करते हैं डीएमएफ की, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन. सो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन एक तरीके का फंड है जिसको सेटअप किया गया था. इसको कब एस्टैब्लिश किया गया, इन विच ईयर, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट. सो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2015. 2015 में इसको लॉन्च किया गया. एंड अमेंडमेंट टू द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957. So these are the two important things that we need to retain here from the examination point of view. And I can see in the chat box that all the people are giving me the right answer here. Now moving on to the next question. The next question is the first ever science center established in an aspirational district. So ये aspirational district का पहला science center recently launch किया गया है दोस्तों. In what is the name of the state where it has been established? That is what you are required to identify here. So what is the name of that state? It is absolutely right. Rajasthan is the right answer. So Rajasthan is the right answer. Moving to the next question. So European Union finance ministers has given the approval. एक country को approval दिया that yes, now you can adopt euro as its official currency. Let me tell you here that पहले इस country की जो currency थी that was leu. And now it has adopted euro as its official currency. What is the name of that country? That is Bulgaria. बुल्गारिया इज द राइट आंसर. ओके, सो अब आपको बताना है कि जो कंट्री यूरो को अपनी ऑफिशियल करेंसी बना लेती है यूरोपियन यूनियन के अंदर, वो बनती है यूरो जोन का पार्ट. तो ये यूरो जोन की कौन से नंबर की मेंबर बनी, दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी रिमेंबर्ड हियर. सो इट हैज बिकम द 21st member of the eurozone. Moving to the next news article, next question. Dash has launched the UHC peers, that is universal health coverage practitioners and experts knowledge exchange and resources. तो ये UHC peers नाम का इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया है दोस्तों? This initiative has been launched by the Asian Development Bank, ADB, which is headquartered in Manila, Philippines, and its president is Masato Kanda. So whenever you are covering any organization, always try to make sure that yes, you are covering its static portion also. Okay, so हमने कवर किया इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका प्रेसिडेंट कौन है. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. सो 134th सेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन. तो आईएमओ का ये जो सेशन है कहां पर हुआ? इट वाज हेल्ड इन लंदन. तो लंदन के अंदर इसे कंडक्ट किया गया. एंड ड्यूरिंग दिस इंडिया हैज बेसिकली हाईलाइटेड इट्स वन ऑफ द अचीवमेंट. द अचीवमेंट वाज अ परसेंटेज इंक्रीज in the number of Indian women seafarers. तो Indian women seafarers में हमने क्या percentage increase देखा है in the previous years? What exactly was that achievement here? So who will be giving me the right answer here? So Deepak, Harshal, Muskan, Gururaj, Shanika. What is the right answer? It is 650% rise which have been seen in the number of Indian women seafarers. So that's why this is the right answer. Moving to the next question, the first ever malaria treatment drug which has been launched for the infants and the newborns. What is the right answer here? That is Cotum Baby. Cotum Baby is the right answer.
Next question, Prime Minister Narendra Modi ji became the first Indian leader to be conferred with Order of the Most Ancient Welvicia Mirabilis. So ये जो highest civilian honor है किस country ने इनको दिया है? It was given by Namibia. Namibia is the right answer. Next part, he has also been conferred with the highest civilian honor, Grand Collar of National Order of the Southern Cross. So ये Southern Cross नाम का award he has been given by Brazil. And when it comes to the Brazil is also having the presidency of BRICS. And it also hosted the 17th BRICS Summit in Rio de Janeiro. Right? So Rio de Janeiro में 17th BRICS Summit हुई थी और अगर हम बात करते हैं next BRICS Summit की, it will be conducted by India. It will be hosted by India in 2026. Next question, Dash became only the third player in the Wimbledon history to record 100 victories in Wimbledon. What is the name of the person? That is Novak Djokovic. Novak Djokovic is the right answer. Next question, the country which defeated US to win the CONCACAF Cup. So 10th title इन्होंने अपना जीता. What is the name of that country? The name of the country is Mexico. So Mexico defeated USA. Okay. Now the next question, Asia's oldest elephant passed away at the Panna Tiger Reserve. So दोस्तों क्या है उस एशिया के oldest elephant का नाम which passed away recently and she was brought from the Kerala to the Panna Tiger Reserve. The name of the elephant is Vatsal. Vatsal. And apart from that, I also told you that sometimes they also ask the name of the state. That is, Panna Tiger Reserve is located in which state? So Panna Tiger Reserve is located in which state? Panna Tiger Reserve is located in Madhya Pradesh. So with this, we are able to revise all the important aspects, dimensions of the previous session's news articles. So have you guys enjoyed this quick revision? Please tell me in the chat box. क्या आप सभी का कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप हुआ आफ्टर आंसरिंग ऑल दिस क्वेश्चंस करेक्टली? सो इसी तरीके से जब आप क्वेश्चंस को करेक्टली आंसर करेंगे सेशन बाय सेशन, डे बाय डे, वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ, एंड देन यू विल सी that now your confidence level is really high and you are exactly in the right direction of becoming the next officer in this year 2025, right? So guys, that's all about this quick revision part. अब हम बढ़ेंगे अपने आज के सेशन की तरफ और आज के सेशन का पहला न्यूज आर्टिकल है संचार मित्र स्कीम नेशन वाइड लॉन्च. सो संचार मित्र स्कीम को नेशन वाइड लॉन्च किया गया है. गाइस हमने मई 2025 के अंदर संचार मित्र स्कीम को कवर किया था एंड वी बेसिकली डिस्कस ड्यूरिंग दैट टाइम दैट रिवैम्प्ड स्कीम को अभी पायलट फेज पर लॉन्च किया जा रहा है. राइट नाउ इट हैज बीन स्केल्ड अप across the entire country and that's why it has been released throughout the nation. and किसकी बात कर रहे हैं हम? संचार मित्र. दोस्तों संचार so basically communication. so Department of Telecommunications under the Ministry of Communication have rolled out संचार मित्र स्कीम. so संचार मित्र स्कीम के अंदर क्या है? basically we are having the digital ambassadors. The students who are the part of the universities, who are studying in the universities, they become the digital ambassadors. And we want to tap on the potential, on their potential of as a digital ambassador to promote telecom awareness and digital literacy. So दोस्तों जब भी हम मोबाइल चलाते हैं, राइट, तो क्या क्या चीजें हैं जो हम फेस करते हैं? एक तो ये फेस करते हैं कि हमारे साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए, राइट, क्या हम प्रॉपरली अपना मोबाइल चला रहे हैं नहीं. दूसरा, कोई हमारे डेटा को हैक ना कर ले, हमारा जो डेटा है वो भी काफी वैल्यूएबल है. सो इसीलिए इन ऑर्डर टू एंश्योर द रिस्पॉन्सिबल मोबाइल यूजेज the Sanchar Mitra scheme has been launched so that we can aware the people that okay, that's how you are required to use your mobile phones, that's how you are required to use this digital equipments और इस तरीके से आप safely इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं. So to provide the digital safety, security and to prevent the cyber frauds being happened, so Sanchar Mitra scheme has been launched by the government of India. And this scheme has been launched by Department of Telecommunication under the Ministry of Communication. तो Ministry of Communication के अंदर आता है टेलीकम्युनिकेशन, संचार विभाग, दूर संचार विभाग, और इसीलिए इन्होंने लॉन्च किया जो दूर संचार विभाग की तरफ से को रिप्रेजेंट करेगा और यहाँ लोगों की सहायता करेगा, उनका मित्र बनेगा. सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड संचार मित्र स्कीम. सो क्या है स्कीम के अंदर? वी विल बी डिस्कसिंग दैट इन अ वेरी डिटेल मैनर. आई होप
जो मेजर पार्ट है स्कीम का वो आप अंडरस्टैंड कर पाए हैं. सो बढ़ते हैं आगे. एंड नाउ व्हेन इट कम्स टू दिस पर्टिकुलर स्कीम गाइस, अर्लियर it was piloted in the selected institutions. So basically what exactly we are doing under this particular scheme guys, we are first identifying a institution. We are identifying an institution, then the people who are working, who are studying in this institution, they are being selected. उनको हम select करते हैं as the संचार मित्र. अब इन संचार मित्र, then these संचार मित्र are being trained. They are being trained. Okay, after that they will be coming up with the awareness drives. They will be awareing the people. लोगों को aware कराएंगे through their awareness drives about the digital safety, right? And that's how we can create a responsible usage of the mobile phones in our society. So that's what the whole part of this Sanchar Mitra scheme. ठीक है, so you can see here that the student volunteers will be designated as the Sanchar Mitras. They will be carrying out grassroots level awareness drives, engage with the communities and the non-government organizations. They will be behaving as a catalyst for informed digital behavior in their surroundings. तो अपने आसपास के एरिया में वो यहाँ पर अपने सराउंडिंग्स के अंदर जो भी लोग रहते हैं उससे डिजिटली सेफ बनाएंगे. जो लोगों का एक बिहेवियर है इन द डिजिटल एरा, सो उसको यहाँ पर ट्रांसफॉर्म किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ संचार मित्र स्कीम. एंड नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, हाउ दिस विल बी डन? So this will be done, first of all, the participating institutions will be identified. So जो local Department of Telecommunication के जो local units हैं उनके जरिए with the help of them we will be identifying the institutions who will be participating in this particular initiative. Then the students who are studying in the universities and they are having a relevant academic background, for example telecom, electronics, computer science, cyber security, so these people will be nominated as Sanchar Mitras. So the Sanchar Mitras will be receiving necessary training from experts. So unko train kiya jayega, as I told you, they will be trained from the experts in the field and from National Communications Academy. तो National Communication Academy के लोग इन संचार मित्रास को train करेंगे because they are required to further tell the people, aware the people about the digital behavior, about the right digital behavior, so that they can responsibly use the mobile phones and the digital equipments. Apart from that, DOT के मीडिया विंग भी यहाँ इनको ट्रेन करने वाला है. एंड दिस ट्रेनिंग ऑफ द संचार मित्रास, it will be going to provide them a exposure of cutting edge telecom technologies which are existing in our society like 5G, 6G, artificial intelligence, cyber security. तो ये सभी जो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज हैं इनका एक्सपोजर मिलेगा इन सभी संचार मित्रास को. एंड देन दे विल बी अवेयरिंग द पीपल थ्रू देयर अवेयरनेस ड्राइव्स, मेकिंग पीपल अबाउट डिजिटल सेफ्टी, साइबर फ्रॉड प्रिवेंशन एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रेडिएशन कंसर्न्स. सो दोस्तों, जहां पर भी कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होता है तो उससे कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स ट्रांसमिट होती हैं. ठीक है, तो उसके क्या कंसर्न्स हैं ये भी उनको बताया जाएगा. एंड दैट्स हाउ वी विल बी creating a responsible mobile usage and digital literacy in our society. So now you will be having a question कि सर इतनी लंबी स्कीम है, इसको याद कैसे करें? How exactly we can remember it? So before that, please give me a thumbs up in the chat box. Are you guys able to understand the scheme? क्या ये स्कीम है? So बहुत easy है इसको याद करना. See, हम बात कर रहे हैं संचार मित्र की. दूर संचार विभाग ने लॉन्च किया संचार मित्र स्कीम. तो संचार से दोस्तों पहले एक ऐड आता था, एक आइडिया जो बदल रहे आपकी दुनिया, कि एक आपको आइडिया मिला और उससे आप स्टार बन गए. बट संचार से स्टार नहीं, आप स्टार बनेंगे. क्या बनेंगे? स्टार बनेंगे. कैसे बनेंगे ये मैं आपको बताता हूं. तो सबसे पहले क्या करना है हमें? वी विल बी आइडेंटिफाइंग द पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन, राइट? सो वी विल बी आइडेंटिफाइंग द पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन. आफ्टर आइडेंटिफिकेशन देयर विल बी सिलेक्शन ऑफ द संचार मित्रास. Selection of Sanchar Mitras. After the selection of Sanchar Mitras, these Sanchar Mitras will be trained. They will be trained across the cutting edge technologies. After that, they will be coming up with their awareness drives. So awareness drives यहाँ पर collect की जाएंगी. And then we will be having a responsible usage of the mobile usage and digital literacy. So I for identification, S for selection, T for training, A for awareness, and R for responsible usage. And that's how we will be creating STAR through Sanchar Mitra scheme. Are you guys able to understand it?
So will you guys be able to retain this information? Is it now easier for you to remember this information from examination point of view? तो बस संचार के से स्टार बनना है, ये याद रखना है, एंड यू विल बी एबल टू रिटेन द कंप्लीट स्कीम, राइट। इसके साथ साथ टेलीकम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने इसको लॉन्च किया, ये भी काफी इजी है। संचार से हम उसको भी याद कर सकते हैं, दूर संचार विभाग under the Ministry of Communications, right? So that's all that we need to retain from this particular scheme, right? And we are done with this scheme. अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल की तरफ, एंड द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज बेसिकली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। सो दोस्तों, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर रिसेंटली लेट मी टेल यू दैट 47th सेशन वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का हुआ था पेरिस, फ्रांस के अंदर। सो पेरिस के अंदर 47th सेशन हुआ था वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का, and during this particular session it was declared that Maratha military landscapes of India, they have been inscribed as India's 44th UNESCO World Heritage Site। तो इसको इंडिया का 44th UNESCO World Heritage Site डिक्लेयर किया गया। अब आपके मन में बहुत सवाल उठ रहे होंगे कि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या है, ये वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी क्या है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले इन ऑर्डर टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस, लेट मी टेक यू टू 1972। आपको 1972 में लेके चलते हैं। सो 1972, इन द 1972 द कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस, एंड ड्यूरिंग दैट कॉन्फ्रेंस यूनेस्को adopted a convention that was World Heritage Convention. So guys, the World Heritage Convention was been adopted in order to identify, protect, preserve the sites which are natural, cultural, historical, scientific, and they are of outstanding value of humanity. So basically कुछ ऐसी sites जो हमारी नेचुरल हैं, कल्चरल हैं, हिस्टोरिकल हैं या साइंटिफिक साइट्स हैं, बट दे आर हैविंग आउटस्टैंडिंग वैल्यू ऑफ ह्यूमैनिटी, ऐसी साइट्स को हमें आइडेंटिफाई करना है, प्रोटेक्ट करना है, प्रिजर्व करना है। कैसे प्रिजर्व करेंगे? थ्रू द इंटरनेशनल कोऑपरेशन। एंड द साइट्स विच आर बीन इंक्लूडेड इन दिस पर्टिकुलर लिस्ट आर कॉल्ड वर्ल्ड heritage sites. So world heritage sites are those areas which are been recognized under the World Heritage Convention that okay, this is the World Heritage Site. So इस World Heritage Site को जब हम बार बार इंक्लूड करते गए अलग अलग साइट्स को, तो एक लिस्ट हमारे पास बन गई। सो हमने उस लिस्ट को कहा वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। आर यू गाइस गेटिंग इट? सो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, इस लिस्ट को कहा गया, एंड बेसिकली वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी डिसाइड करती है दैट विच particular site will be included in this World Heritage List. Now, I hope that the context of this news article is very clear to you. Now, coming back to the news article. So, recently, 47th session is World Heritage Committee का conduct किया गया, and it was declared that the Maratha military landscape of India, they will be included in the World Heritage Site list of UNESCO, and it has become the 44th entry of India into the World Heritage List. I hope this part is clear. So अब इस इंस्क्रिप्शन के साथ इंडिया की टोटल 44 प्रॉपर्टीज वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट का हिस्सा हैं, जिसमें 36 कल्चरल हैं, एक नेचुरल है और एक मिक्स हेरिटेज साइट है, विच इज कंचनजंगा नेशनल पार्क। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स ऑफ इंडिया की, so basically this is the group of 12 forts which basically shows the strategic vision of the Maratha Empire. So मराठा एम्पायर की स्ट्रेटेजिक विजन को और रिजेंबल रिफ्लेक्ट करने वाली ये जो 12 फोर्ट्स का ग्रुप है, which was being created from the 17th to the 19th centuries and showing the extraordinary network of 12 forts which were being created by Maratha Empire. So इनको यहाँ इंस्क्राइब किया गया है as a World Heritage Site, and it has become 44th World Heritage Site from India in this particular list. ओके, सो अगर हम बात करें 12 फोर्ट्स की, 12 फोर्ट्स कौन सी स्टेट्स के अंदर हैं? दीज आर इन द महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। तो महाराष्ट्र और तमिलनाडु के अंदर ये 12 फोर्ट्स लाई करते हैं। ओके, नाउ कमिंग अहेड, अगर हम बात करें 12 फोर्ट्स, कौन कौन से फोर्ट्स हैं ये, तो पूरे 12 नाम मैंने आपको यहां पर प्रोवाइड किए हैं। दिस इंक्लूड्स सलहेर, शिवनेरी, लोहगढ़, खंडेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्णदुर्ग, पन्हाला, विजयदुर्ग एंड सिंधुदुर्ग इन महाराष्ट्र अलॉन्ग विद गिंजी फोर्ट इन तमिलनाडु। तो गिंजी फोर्ट तमिलनाडु के अंदर है और बाकी जो 11 फोर्ट्स हैं हमारे वो महाराष्ट्र के अंदर है, राइट।
सो यहाँ पर आपको पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी गई है कि इसमें से कुछ हमारे हिल फोर्ट्स हैं, कुछ हमारे हिल फॉरेस्ट फोर्ट हैं, सम आर हिल प्लेट्यू फोर्ट, सम आर कोस्टल फोर्ट्स एंड सम आर आइलैंड फोर्ट्स। ठीक है, तो ये अलग अलग फोर्ट्स हैं, तो एक ग्रुप है इनका, एंड बेसिकली दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड दीज 12 फोर्ट्स एंड दे हैव बीन इंस्क्राइब्ड एज द मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स ऑफ इंडिया में टोटल 12 फोर्ट्स हैं, 11 महाराष्ट्र के अंदर है और एक आपका तमिलनाडु के अंदर है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, सो दीज आर बेसिकली प्रोटेक्टेड अंडर द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और अगर हम सलहेर फोर्ट, राजगढ़, खंदेरी की बात करें, सो दीज आर प्रोटेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। ओके, सो टिल नाउ आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल द पीपल। नाउ मूविंग अहेड, अगर हम बात करते हैं, अगर हम इस पूरी लिस्ट बनाएं एशिया पैसिफिक रीजन में जिन जिन कंट्रीज ने के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, अगर उनको कलेक्ट किया जाए, उसकी एक लिस्ट बनाई जाए, तो इंडिया इस लिस्ट के अंदर टोटल 6 रैंक पर आता है। तो ग्लोबली इंडिया 6 रैंक पर आता है और सेकंड आता है एशिया पैसिफिक रीजन में। सो अक्रॉस द वर्ल्ड इंडिया इज ऑन द 6th पोजीशन एंड इन द एशिया पैसिफिक रीजन इंडिया इज ऑन द 2nd पोजीशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। ओके, सो अगर हम बात करते हैं हाईएस्ट नंबर ऑफ साइट्स कहां पर हैं, दीज आर इन इटली एंड चाइना। सो सबसे ज्यादा कहां है, इटली और चाइना के अंदर है 60 ईच। अगर इंडिया की बात करें, इंडिया के अंदर है 44। ठीक है, अगर ओवरऑल लिस्ट की बात करते हैं वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट की, इट is having right now 1232 properties which includes 49 transboundary sites in 168 states parties। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ टोटल आप देख सकते हैं नंबर, इट इज 1232 प्रॉपर्टीज विच आर देयर इन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो पहली की 4 साइट्स हैं, जो इंडिया की पहली 4 साइट्स थी जिनको यहाँ इंक्लूड किया गया था एज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट, दैट वाज डन इन द 1983। तो 1983 में इनको इंक्लूड किया गया। That includes Ajanta caves, then Ellora caves, Agra fort and Taj Mahal। और इंडिया ने नेक्स्ट ईयर के लिए भी अपना नॉमिनेशन रेडी कर लिया है एंड दैट इज बेसिकली सारनाथ इन वाराणसी। तो वाराणसी के अंदर जो सारनाथ है उसको इंक्लूड किया जाएगा, उसको नॉमिनेट किया जाएगा फॉर द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट फॉर द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने रिमूव किया है 3 अफ्रीकन हेरिटेज साइट्स को। दोस्तों अब इस मीटिंग में 47 सेशन के अंदर World Heritage Committee has removed the 3 African sites. What are these 3 African sites? These are rainforests of the Atsi Manana in Madagascar, Abu Mena in Egypt and Old Town of Ghadams in Libya। तो ये 3 साइट्स हैं अफ्रीका की जिसको रिमूव किया गया। टोटल साइट्स 1232 हैं। इंडिया की 44 साइट्स हो चुकी हैं। मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स ऑफ इंडिया बनी है इंडिया की तरफ से 44th वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट साइट, राइट। अगर हम बात करें ऑन द टॉप इट इज इटली एंड चाइना विद 60 ईच और इंडिया के पास 44 है। इंडिया इज ऑन द 2nd पोजीशन ग्लोबली, राइट। सॉरी, इंडिया इज ऑन 2nd पोजीशन द एशिया पैसिफिक रीजन एंड ऑन द 6th पोजीशन ग्लोबली। ओके, नाउ मूविंग अहेड। सो अभी अगर हम बात करें दोस्तों, बेसिकली क्या प्रोसेस है इसका कि किसी साइट को हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड करते हैं। सो बेसिकली पहले एक टेंटेटिव लिस्ट बनाई जाती है, राइट। फिर टेंटेटिव लिस्ट से उस पर्टिकुलर साइट को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर इंक्लूड किया जाता है। सो अभी अगर हम बात करें टेंटेटिव लिस्ट में, इंडिया की टोटल 62 साइट्स हैं विच आर इन द टेंटेटिव लिस्ट, जो कि एक मैंडेटरी थ्रेशोल्ड है कि उसको इस लिस्ट से बाहर आके वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर आना होगा। एंड अगर हम बात करते हैं लास्ट ईयर इन 2024 विच वाज द लास्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट फ्रॉम इंडिया, दैट इज द 43rd साइट ऑफ इंडिया, दैट वाज द मोइदाम्स ऑफ शेरिड्यू इन असम। तो 2024 में इसको इंक्लूड किया गया था इन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, राइट। सो एज ऑफ नाउ 196 नेशंस ने रेटिफाई किया वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन को। आई टोल्ड यू अबाउट द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन। 1972 में अडॉप्ट किया गया था, जिसके अंदर हम ये पूरी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट को बनाते हैं। आफ्टर दैट अगर हम बात करें तो ये जो कन्वेंशन है दोस्तों, इसको इंडिया ने 1977 में रेटिफाई किया और ये कन्वेंशन अडॉप्ट किसने किया था, यूनेस्को ने अडॉप्ट किया था, दैट इज यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और हमने देखा कि यहां पर साइंटिफिक, हिस्टोरिकल, कल्चरल और नेचुरल साइट्स को इंक्लूड किया जाता है इन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। अगर यूनेस्को की बात की जाए, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1945 और यहां पर विद द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस इन लंदन, तो लंदन में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी और 1945 में तब इसको एस्टैब्लिश किया गया था। इट इज हेडक्वार्टर्ड इन पेरिस, फ्रांस। एंड आई ऑल्सो टोल्ड यू वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी सेशन ऑल्सो टुक प्लेस इन पेरिस, फ्रांस, राइट।
194 मेंबर्स हैं इसके एट प्रेजेंट। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमने याद कर लिया अबाउट द यूनेस्को एज वेल। सो बेसिकली जब भी कोई मेजर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आती है यहाँ पर स्कोप के अंदर, वी हैव टू एंश्योर दैट वी आर आल्सो कवरिंग द इंपॉर्टेंट डिटेल्स अबाउट दैट पार्ट, राइट। मूविंग अहेड, अगर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बात की जाए तो टोटल 21 मेंबर स्टेट्स हैं इसके अंदर, जिसकी 6 इयर्स का टर्म रहता है। अगर वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बात की जाए तो इंडिया भी इस 21 मेंबर वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का पार्ट है। 2021 में इंडिया इलेक्ट हुआ था फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years फ्रॉम 2021 टू 2025, और दिस वाज द 4th टर्म ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। सो गाइस, विद दिस वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दैट दिस वाज द 44th वर्ल्ड हेरिटेज साइट फ्रॉम इंडिया इन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। अगर हम बात करते हैं अक्रॉस इंडिया देयर आर टोटल 44 साइट्स। अगर हम बात करेंगे इंडिया के अंदर की, सो बेसिकली 44 साइट्स हैं, और ओवरऑल अगर हम बात करें तो बेसिकली 60 साइट्स आर फ्रॉम इटली एंड चाइना एंड विच आर ऑन द टॉप, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सो एब्सोल्युटली राइट, सो ऑल द पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल पर, दैट इज ISA इंडस्ट्री एक्सेलेंस अवार्ड 2025। So guys, recently Telangana has bagged the India Energy Storage Alliance Industry Excellence Award 2025। किस स्टेट कैटेगरी के अंदर इसको दिया गया अवार्ड? The award has been given in the battery manufacturing category, right? So just remember the name of the state which has won this award, that is Telangana, which has won this award in the India Energy Storage Alliance। Moving to the next news article, so world की पहली $4 trillion पब्लिक कंपनी बन चुकी है NVIDIA। So basically in the recent market evaluation, it has surpassed the mark of $4 trillion, and it has become the first publicly traded company to reach this milestone। और इस milestone को अचीव करने के लिए इन्होंने सरपास किया है एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट को। और NVIDIA दोस्तों एक लीडिंग अमेरिकन टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कि अपने ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए जानी जाती है। आप सभी देखते हैं गाइस, जब हमें हाई परफॉर्मिंग और डिजिटल इक्विपमेंट्स को देखते हैं, गेम्स खेलते हैं, तो उसमें जीपीयू हमारा अच्छा होना चाहिए, राइट। सो उसी जीपीयू को बनाती है NVIDIA। आई होप दिस इज क्लियर। सो NVIDIA ये वर्ल्ड की पहली $4 trillion पब्लिक कंपनी बन चुकी है। प्लीज रिमेंबर द नेम। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल, दैट इज अस्त्र। सो अस्त्र एक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है जिसकी फ्लाइट टेस्ट की गई थी बाय द DRDO एंड द इंडियन एयरफोर्स। सो इंडियन एयरफोर्स और DRDO ने फ्लाइट टेस्ट किया अस्त्र मिसाइल का, जिसकी रेंज है 100 किलोमीटर। सक्सेसफुल टेस्ट था गाइस, एंड फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वी नीड टू रिटेन दिस इंफॉर्मेशन दैट यस, अस्त्रा इज द नेम ऑफ दैट मिसाइल विच इज हैविंग द रेंज ऑफ 100 kilometers, and it has been indigenously made beyond visual range air to air missile। Okay, if the question will be asked what is the name of this missile, what will be the answer? Astra missile। Moving to the next news article, so that is related to the Shooting World Cup 2027। So International Shooting World Cup 2027 will be taking place in India, and India will be hosting this event for the 6th time। So for the 6th time India will be hosting this event, and New Delhi के अंदर ये इवेंट होस्ट किया जाएगा, ठीक है। सो इस ISS वर्ल्ड कप के अलावा जूनियर शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2028 की भी साथ में होस्ट करेगा इंडिया एंड न्यू दिल्ली। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर न्यूज आर्टिकल, ठीक है। तो काफी छोटी छोटी न्यूज आर्टिकल है दोस्तों, और इसीलिए आई एम जस्ट गिविंग यू दैट ओके दिस इज द राइट पार्ट दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर, एंड देन वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। क्योंकि यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट अच्छी चीज क्या है कि हमें बस उतना ही पढ़ना है जो हमारे एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, राइट। ज्यादा नहीं पढ़ना, कुछ चीजें मैं आपको एडिशनल बताता हूं सो दैट आप बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाओ उस न्यूज आर्टिकल को। बट ये न्यूज आर्टिकल्स बहुत डायरेक्ट हैं, आपके जीए का पार्ट है, और वन लाइनर क्वेश्चन आएगा यहां से, एंड यू विल बी जस्ट सीइंग द ऑप्शन बिफोर यू विल बी गिविंग द राइट आंसर एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दैट्स व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस पार्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल पे, दैट इज कुमार मंगलम बिरला के ऊपर न्यूज आर्टिकल है। सो कुमार मंगलम बिरला has joined the executive committee of the US India Strategic Partnership Forum। So दोस्तों ये जो US ISPF है, US United States India Strategic Partnership Forum, so basically it is having the offices in both US and the India। So जो हमारी कंपनीज हैं, इंडिया की कंपनीज हैं, यूएस की कंपनीज हैं, इंडिया का लेजिस्लेशन है, यूएस का लेजिस्लेशन है, तो ये आपस में इनको ब्रिज करता है सो दैट इनके बीच में कुछ अच्छी डील्स हो सके, एंड दैट इज वाई
for basically enhancing the bilateral ties between the United States and India. Recently, Kumar Mangalam Birla was also been awarded with the 2025 Global Leadership Award. तो ये अवार्ड भी रिसेंटली यूएस ISPF लीडरशिप समिट के दौरान दिया गया था और हमने इस सेशन के अंदर उसे कवर भी किया था. ठीक है. सो यूएस ISPF के एग्जीक्यूटिव कमेटी के बोर्ड के अंदर कुमार मंगलम बिरला जी को यहां पर इंक्लूड किया गया है. एंड कुमार मंगलम बिरला इज द चेयरमैन ऑफ आदित्य बिरला ग्रुप विच इज इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट कॉन्ग्लोमरेट. सो यहां पर हमने सभी इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस कर लिया. बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल पे. दैट इज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2025. सो एवरी ईयर वी सेलिब्रेट द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ऑन 11th of July, and this year the day is being celebrated with the theme empowering young people to create the families they want in a fair and hopeful world. So दोस्तों बेसिकली अगर हम बात करते हैं, रिसेंटली वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट आई थी. ठीक है, वहां पर हमने कवर किया था और इस बार स्पेसिफिकली मेंशन था. They were basically not concerned about the increasing population, but इस रिपोर्ट के अंदर ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि there are people who want to have families but they are unable to have. So इस कंसर्न को हमें रिजॉल्व करने की जरूरत है और इस इशू को हाईलाइट किया गया था. एंड द सेम थिंग today we are basically seeing that it has been mentioned as the theme for this year. As the theme says, empowering young people to create the families that they want in a fair and a hopeful world, right? So this is the theme. So we have covered whenever there is an important date, the date and the theme are required to be remembered from examination point of view. So that's all, and this was the last article of the today's session. So guys, I hope कि आज के सेशन से आपको definitely काफी चीजें समझ में आई होंगी that we require to cover. कैसे न्यूज आर्टिकल को अप्रोच करना है, कैसे हमें चीजों को पढ़ना है, how we are required to understand the news articles, right? And let me tell you that just covering the news articles is not at all sufficient from examination point of view. The reason behind that is because in the examination you will be asked the MCQs across these news articles, and that's why it is very important for us to practice these MCQs which are based on these current affair articles, right? So here I am having some questions for all of you so that we can see whether you are able to retain all the important information or not. And here is the very first question for all of you. So whenever you see such kind of question, I always tell you कि in statement based questions के अंदर there is a certain approach that we need to use. So here the first part is we need to identify the central topic of the news article. What is the central topic जिसके ऊपर ये पूरा question based है? So this question is based on Maratha military landscapes of India inscribed as UNESCO World Heritage Site. This is the central topic. Now the second dimension is, the second step is basically to identify the demand of the question. What is the demand? What is it the question asking you? It is asking you to identify incorrect statement. Incorrect statement आपको identify करनी है. Okay? Now the third part is focusing on the keywords. तो keywords यहाँ पर क्या है दोस्तों? So धीरे धीरे चलेंगे. Maratha military landscape of India, 44th UNESCO World Heritage Site during 47th session of World Heritage Committee. So is this statement right or wrong? Is this true or false? This is true. This statement is correct here. Why? Because yes, 44th UNESCO World Heritage Site बन गया from India. That is Maratha military landscape of India. 47th session के दौरान कहाँ हुआ था ये सेशन? पेरिस, फ्रांस के अंदर हुआ था. Next statement, Maratha military landscape network of 12 forts located in Maharashtra and Uttar Pradesh. So we have already covered that these forts are in the Maharashtra and Tamil Nadu and not in the Uttar Pradesh. So the second statement is incorrect. Okay. So now we are having, you can see here in the options guys, you can see that yes, 2 is here, but statement number 1 is correct. So option A cannot be the answer. Option B cannot be the right answer because अभी हमने third statement को पढ़ा नहीं है, right? Right now, till now, we have not even read the third statement. But यहाँ पर आप देख सकते हो third statement की बात नहीं हो रही. Only 3 cannot be the answer because statement 2 is incorrect here. 1, 2 and 3 cannot be the right answer because 1, 2 and 3. 1 is absolutely right, right? So 2 and 3 या तो गलत हो सकते हैं. So एक ही ऑप्शन बचता है, that is option E, that is only 2. तो अगर आपने इस एलिमिनेशन मेथड से ही सिर्फ सेकेंड स्टेटमेंट तक आके अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हो, व्हाट्स बेटर देन दैट? क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर टाइम कम होगा, यू विल बी हैविंग अ लॉट ऑफ प्रेशर कि यार 25 मिनट्स का पेपर है आरबीआई का, 80 क्वेश्चंस आंसर करने हैं, राइट? सिमिलरली नाबार्ड के एग्जाम में भी आपके कम मतलब क्वेश्चंस हैं और फिर टाइम आपका काफी कम है.
So how we are required to answer these questions? That is the approach that we need to use. तो काफी स्टूडेंट्स ने बहुत जल्दबाजी में ऑप्शन ई को आंसर कर दिया होगा और उन्होंने तीनों स्टेटमेंट्स को पढ़ा होगा. कौन कौन था ऐसा स्टूडेंट, बताइए मुझे. कौन कौन था ऐसा स्टूडेंट जिसने तीनों स्टेटमेंट्स को पढ़ा है? सी, यहां पर तीन स्टेटमेंट्स को पढ़ने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है. Why not we just be smart and let's save our time? See, every second in the examination matters, right? Every moment matters. Why not just capitalize on that moment in solving the next question? ठीक है? So basically ये चीज हमें सीखनी है दोस्तों, and that's why we are taking these current affairs sessions for you, so that we can show you that okay, these are the different ways that you can use to outsmart other people and increase your chances of selection, right? I hope all of you have got this point. Now moving on to the next question. So next question is on the India Energy Storage Alliance Industry Excellence Award. Which state has been given this award? Very easy, हलवा question आप सभी के लिए. That is option B, that is Telangana. Telangana is the name of the state which has come up with this part. Absolutely right. So Harshal has basically accepted this, that yes, he also focused all the three statements. So this honesty is really important कि अपने आप से हमें ऑनेस्ट रहना है कि हाँ ये मैंने एक चीज की है. डेफिनेटली एक लर्निंग है जो हम यहाँ से लेकर चल सकते हैं. ठीक है. सो दोस्तों, these are the two questions that I was having today in this MCQs part. But yes, let me tell you that I am also having a homework question. और होमवर्क क्वेश्चन है आपका संचार मित्र स्कीम के ऊपर. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट वी हैव कवर्ड इन द टुडेज सेशन. तो संचार मित्र स्कीम को कैसे याद रखना है? आई टोल्ड यू, संचार मित्र स्कीम को आपको याद रखना है संचार से स्टार. तो कौन कौन स्टार परफॉर्मर बनेगा आज के सेशन का देखेंगे हम अपने अगले सेशन के अंदर. अगर हम बात करते हैं पिछले सेशन के स्टार परफॉर्मर्स की, तो पिछले सेशन के स्टार परफॉर्मर्स ने आंसर दिया फर्स्ट एवर साइंस सेंटर इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, एंड द राइट आंसर वाज हियर ऑप्शन ए, दैट इज 1 and 2. Guys, so many students, I saw comments from so many students, they are answering option D as the right answer. See, D says 1, 2 and 3 are correct. But statement 3 is not correct here. See, it states that newly inaugurated center is based on the concept of Vigyan Setu, which aims to connect. किसको connect करेगा? Scientific institutions with the elite research hubs and technology parks. But we have specifically mentioned there that this Vigyan Setu will be connecting the scientific institutions with the underserved regions, underserved hubs. So अगर कोई चीज ऑलरेडी elite research hub है उसके साथ कनेक्ट करने का कोई पॉइंट ही नहीं है. That's why the third statement is incorrect, and there are so many people who have mentioned option D as the right answer. But yes, again, what exactly we can take from here? A very important thing, learning. कि जब भी हम क्वेश्चन का आंसर करें, we are required to analyze every keyword properly so that we are able to answer the question successfully in the examination, right? तो जिसने गलती की है पिछले सेशन के अंदर, आई बिलीव उनके लिए बहुत ही लर्निंग पार्ट है. जिन्होंने क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं किया उनके लिए भी लर्निंग है कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है. ओके, अंडरस्टूड गाइज. नाउ अगर हम बात करें स्टार परफॉर्मर्स की, तो हमारे स्टार परफॉर्मर्स कौन कौन है पिछले सेशन के? सिंधु, शनिका, स्वास्ति, प्रणति, ज्योति, मूनचाइल्ड, Humang. So these are the star performers, guys. I'm really proud of you. But yes, the people who are not able to answer the question, do not worry, guys. So basically, I think when we will be taking the learning from this part, definitely next session के अंदर, आने वाले एग्जाम के अंदर, definitely you will be answering the question correctly, right? बस अपने इस learnings को, अपने ये जो loop holes हैं, इनको note down करके रखें कि ये गलती जो एक बार कर ली, इसको दोबारा नहीं करना. ठीक है. आई होप दिस पार्ट इज क्लियर. सो गाइस, दैट वाज ऑल फ्रॉम द टुडेज सेशन, एंड आई होप कि आज के सेशन में आपको डेफिनेटली मजा आया होगा और इस सेशन को डेफिनेटली रिवाइज करना है आप सभी को और इंश्योर करना है कि अगले सेशन में आप प्रॉपर रिवीजन के साथ आए. ओके, सो रिवीजन के लिए आपको पीडीएफ की रिक्वायरमेंट रहेगी. यू विल बी गेटिंग द पीडीएफ फ्रॉम द टेलीग्राम चैनल, जिसको ज्वाइन करने का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, राइट? सो दैट्स वाज ऑल फ्रॉम द टुडेज सेशन. आई होप that all the people have enjoyed this session. You are having any queries, guys, please feel free to ask the queries in the chat box. अगर कोई query आपको बाद में भी आती है तो आप comment section के अंदर mention कर सकते हैं. And yes, there are some queries that were there in the comment section. Do not worry, I will be answering you, right? Some of them were answered, but हाँ कुछ बची हैं, उनको भी answer किया जाएगा. Do not worry about it. Apart from that, अगर आपको कुछ mentorship guidance चाहिए हमसे, definitely you can share your email, you can share your concern to us
by sharing an email at hello@edutap.co.in. You can also call us at 8146207241. ठीक है, सो आप बेसिकली कॉल कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, कैसे भी करके एक चीज इंश्योर करनी है दोस्तों कि कोई भी डाउट चाहे छोटा है या बड़ा उसको मन में नहीं रखना, अपने पास नहीं रखना, उसको हमें दे दीजिए, राइट? So that we can provide you the solution to that, because each such small or big doubt acts as a kind of obstacle in your journey of becoming the next officer. And we at EduTap, we have basically pledged this part that okay, we just want your journey to be as smooth as possible. Okay, so I can see here that there are no queries for now in the session. That means we can conclude this session. So we will be seeing here that who will be giving me the right answer in the comment section and becoming the star performer of the today's session. So guys, now I will be meeting you in the next session. Till then, stay happy, stay healthy. Wish you all happy learning.